Chemistry from GNDU Amritsar in 1986. He's a chartered chemist and a fellow of the Royal Society of Chemistry, London, UK, with memberships on several editorial and advisory boards of prestigious international and national journals. His career also includes a distinguished tenure at Thapar University, where he served at multiple capacities, including Deputy Director, Dean of Research and Sponsored Projects, and Head of the School of Chemistry. Dr. Mittal is not only an eminent researcher, but is also a prolific contributor towards the field of science, with over 135 quality research papers published in record journals. His research interests include monitoring and predicting particulate pollution during crop residue burning, its effects on human health, and the development of biosensors and chemical sensors like ion-sensitive field effector transistors. He has completed 12 sponsored research projects, including one funded by the Royal Academy of Engineering UK. As a mentor to many, Dr. Mittal has supervised numerous PhD scholars along with postgraduate students in the field of environmental engineering and chemistry. His global exposure through visits to countries such as the USA, UK, Japan, Belgium and Colombia has enriched his perspective on education and research, enabling him to bring a holistic approach to his leadership. With such words, we are truly honored to have an Honorable Vice Chancellor Sir over here. And now I request Dr. Rashmi Gujarati, Director IQAC PCT Group of Colleges, to please present a bouquet to our Honorable Vice Chancellor Sir as I invite Sir to the stage. May we please continue to put our applause forward as our Honorable Vice Chancellor is being honored. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Moving on forward, we are privileged to introduce Dr. Bhardwaj, the distinguished Vice Chancellor of Maharishi Valmiki Sanskrit University, a dynamic leader and educator, whose dedication to excellence and innovation has significantly contributed to the growth and success of the institution. Professor Bhardwaj is a distinguished scholar of Sanskrit and Indian philosophy, with over 35 years of teaching experience at the University of Delhi. He has also held numerous administrative positions, including Senior Professor, Head of the Sanskrit Department, and Director of Gandhi Bhavan. Professor Bhardwaj holds traditional qualification of Shastri and Acharya from Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, and modern degrees, including MA, MPhil, and PhD from the University of Delhi. He is also trained in Indian philosophy at Tokyo University, Japan, fluent in multiple languages including Sanskrit, Western, Hindi, English, and Japanese. Professor Bhardwaj's research focuses on the chronology of Vedic literature and integrating the Indian knowledge systems into the higher education as part of NEP 2020. He has received several prestigious awards, such as Von Busho Fellowship from the Government of Japan, Sanskrit Seva Puraskar from the Haryana Sanskrit Academy, and the UN Brahma Soldier of Humanity Award. His international roles include serving as the ICCR Chair of Sanskrit and Indian Philosophy in Mauritius, and participating in international conferences, translation projects in Russia, Japan, and Croatia. He has authored numerous books and articles and has been an active participant in national and international seminars and faculty development programs, and making significant contribution to the field of Sanskrit and Indian philosophy. We really welcome you here, sir, today. And now I request Professor Prabjot, Dean Academics, PCT Group of Colleges, to please present a bouquet to our Honorable Vice Chancellor, Dr. Bhardwaj. And please give a big round of applause to the sir. We are delighted to have you here, sir.
give a round of applause once again, ladies and gentlemen. And now moving forward, we are pleased to introduce Dr. S.K. Mishra, the esteemed registrar of IKG Punjab Technical University, with a wealth of administrative expertise and a strong commitment to academic excellence. Sir plays a pivotal role in overseeing the smooth functioning of the university, ensuring its continued growth and success in the educational landscape. Dr. Sushendra Kumar Mishra is working with IKG PTU as registrar and is also heading the Center of Executive Education. He is a member secretary of BOG, FC, AC, Senate, and chairman of BUS and all other committees. Dr. Mishra worked at the B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar as registrar and head as the Center of Continuing Education. He is also worked as director, controller, and dean in Punjab Technical University, Jalandhar. He is an alumnus of IIM Bangalore and Syracuse University in New York, USA. He has done his MBA and PhD in management and has more than 25 years of experience in the field of academic administration, educational planning and management, financial management, human resource management, and public policy. Dr. Mishra has published many research papers, books, and patents, and has organized numerous conferences, seminars in India and abroad. He has visited many countries like Malaysia, Thailand, Australia, Slovenia, Singapore, Austria, and the USA. Dr. Mishra is a life member of the All India Management Association, New Delhi, and a member of Indian Society for Technical Education, Youth Hostel Association of India, Association of Indian Management Scholars International, Hostel, USA, and Associate Fellow of World Business Institute, Australia, and member of International Economic Development Research Center, Hong Kong. Well, we are truly privileged to have you here, sir, and I request you please come to the stage, and I also request Ma'am Seema Thakur, coordinator of the pharmacy department, to please present a bouquet and a token of love to our worthy registrar, sir. May we please welcome sir with a new round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It gives me immense pleasure to introduce the next speaker for the gathering, Professor Dr. Dinesh Tripathi. He is a renowned educator in India, known for his wide-ranging contributions to digital media, youth development, and the Indian knowledge system. He has played a pivotal role in shaping educational frameworks, notably designing the Knowledge of India curriculum called SCERT Delhi, aimed at fostering a deeper appreciation for India's cultural and historical heritage. A strong advocate for digital education, Dr. Tripathi is actively involved in platforms like Swayam and Swayam Plus, working to democratize learning and making higher education possible to all. As an expert member of UGC's Distance Education Board, he has been instrumental in evaluating and shaping online courses for Indian universities. His leadership in the development of EPG Pathshala, India's largest academic repository for postgraduate students, and the highly acclaimed MOOC courses, Society and Media on the Swayam platform, which has been ranked among the top 100 online courses globally, underscores his commitment to expanding digital education. Dr. Tripathi has been a dedicated trainer under the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching, enhancing pedagogical skills at all educational levels. Internationally, he serves as the ethical expert for the Erasmus Plus project funded by the European Union, and he has presented his research in prestigious venues such as the British Parliament. He has contributed to the Commission for Scientific and Technological Terminology by developing scientific vocabulary in Indian languages. With over 60 scholarly publications and 9 major research projects funded by prestigious bodies like UGC, ICSSR, Dr. Tripathi's contributions continue to shape India's educational landscape, making him a thought leader in both national and international academic spheres. Truly a leader in great sense. Please welcome him with a great round of applause. Now I request my fellow master ceremony, Ms. Vinny Sam, the coordinator of Campus on Business Management, to please present a token of appreciation to our guest, Dr. Dinesh Tripathi. May we please have a huge round of applause for him. Thank you so much, sir.
our next esteemed guest for the day is Dr. Ravi Mishra, a distinguished professor of mathematics and the Dean of Alumni and Industrial Relations at Sant Mobile Institute of Engineering and Technology. Dr. R.K. Mishra is the professor and Dean of Alumni and Industrial Relations with a PhD in mathematics specializing in astrophysics and space sciences. Dr. Mishra's expertise lies in solving real-life problems through mathematical modeling and differential equations. His research interests include cosmology, mathematical modeling, and Vedic mathematics. Over the years, he has made substantial contribution to the field of astrophysics through theoretical mathematics, focusing on physical phenomena and advanced modeling in space sciences. Dr. Mishra has 28 years of experience in teaching, research and administration, including 23 years at SLIET. He has held various key roles, including serving as registrar at the National Institute of Technology, where he showcases leadership and administrative capabilities. As the Dean of Alumni and Industrial Relations, Sir actively engages with industry professionals and alumni to foster collaborations and establish ties. Dr. Mishra continues to guide PhD students, contributing to their scholarly work and participating in national and international conferences. To his credit, Dr. Mishra has authored over 100 publications with 72 in referred journals and has been actively involved in organizing various conferences and workshops at national and international level. He is a life member of several prestigious academic societies and has received numerous awards, including the SSPS Award of Excellence in 2022, the Young Scientist Award in 1997, and has played a crucial role in fostering industry-institute linkages and signing MOUs with multiple universities. We are truly honored to have you here, sir, and as you come to the stage, I request Ms. Nisha Arora, coordinator of the CSE department, to please present a bouquet to our esteemed guests. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are really elated to have all the dignitaries over here. Now, I would like to invite the convener of the third national conference and director of PCT Bardhawan, Dr. Naresh Sachdev, to introduce our August gathering and enlighten them about the PCT group of colleges and about the third national conference. Good morning, distinguished guests, esteemed colleagues, scholars, and all the guests across from the various colleges. It's my great honor and privilege to welcome our worthy Vice Chancellor, Dr. Sushil Mittal, Vice Chancellor, IIT Jalandhar. I also indebted to Dr. Ramesh Chandra Bhagwat, VC Maharishi Valmiki Sanskrit University, Keynote. Dr. Yogesh Tripathi, Professor at GDSIB University, Delhi. Dr. S.K. Mishra, Registrar, IKG BTU, Jalandhar. And Dr. R.K. Mishra, and everyone present here on this third national conference organized by PhD Group of Colleges. I am also indebted for the collaboration we had with the Academy of Innovation in Technology and Management, Jalandhar, and Diksha Sanskriti Uttan, Nias, New Delhi, for their indebted support to hold this conference at PhD Group of Colleges. And I extend my heartfelt gratitude to each one of you for joining this event. Let me take a moment to introduce PhD Group of Colleges, which was incepted, founded in 1999, and with the vision to provide quality education and foster holistic development. PCT has grown into the premium institution into the northern area, offering a wide spectrum range of undergraduate and postgraduate programs. Over the period, PCT has consistently worked towards creating an environment for promoting creativity, innovation, fostering entrepreneurship.
PCT welcomes students from 62 countries, fostering a vibrant global community and offering enriching educational landscape. My heartfelt gratitude, and I really go out of way to say that, in PCT we have 70 gold medals till date. We have 30 national and international collaborations. We have 70 international collaborations. And my privilege and proud, I would also like to highlight that we have a PCT Chancellor incubator for the last 6-7 years, and we are on the top 12 incubators of Punjab. We are registered with Innovation in Punjab, with Punjab in what we call Startup Cell, India Startup Cell, and a couple of our startups have got funding from 1 crore to 75 lakhs to numerous fundings and grants which we got from Ministry of Agriculture, Farm and Welfare and from Innovation in Punjab. This conference comes at a time when the role of education is being reshaped to meet the needs of rapid evolving environment, which is very volatile, uncertain, complex and ambiguous. And as well as you know that education is the backbone for every country. A nation cannot thrive in the competitive global leadership of its education system does not contribute to its development. However, this is where the National Education Policy 2020 brings fresh perspectives. NEP 2020 stands on the pillar of equity, quality, affordability, and accountability. This policy is aligned with the agenda for sustainable development and its goal to transform India into the global knowledge superpower by making education more holistic, flexible and multidisciplinary to reach 5 trillion economy in the next 2 years. At the heart of today's conference is the Indian knowledge system, a rich and ancient tradition of learning that has been passed through generation to generation. As we embark on this journey of learning, sharing and innovation, I encourage all of you to actively participate, divulge into conversation for this conference for Indian knowledge system. In conclusion, I would like to express my deepest appreciation to all collaborators, especially Academy of Innovation and Technology and Management and Shiksha Sanskriti Uddhan Vihas, New Delhi for their unwavering support and partnership in making this event possible. I would also like to thank all speakers, participants and attendees for contributing to the success of this conference. I look forward for enriching discussions, valuable takeaways that will emerge from this gathering. Together, let's all work towards building a future where education serves as a foundation for growth, innovation and social progress for our India towards 5 trillion economy. Once again, I express my heartfelt gratitude with Jiayanu, welcome and Sasika. Thank you so much, Dr. Naresh. And as the conveners of this conference, I request Dr. Naresh Sachdeva and Dr. Hamid Singh to please take their positions on the dais. We have some other eminent guests also present in this August gathering, and our function cannot go without honoring them. So now I hereby invite Dr. Nitya Sharma to please accept our token of gratitude, and may I please request Dr. Rashmi Gujarati, Director IQAC, to please present her a floral bouquet. May we please welcome ma'am with a huge round of applause. Next, to accept our token of gratitude, I'd like to call on Dr. Vikash PG, and I request ma'am Dini Syal to please present him a floral bouquet. May we please welcome sir with a huge round of applause as he takes center stage. We should not stop applauding when we have such interesting people in the gathering. Next, I request Ma'am Dr. Rekha Devi to please accept our heartfelt gratitude for coming here, and may I please request Prabjot Ma'am to step forward
and welcome our guest with a floral bouquet. May we please welcome ma'am with a huge round of applause. Next, I would like to call on Dr. Sachin, and may I please request Ma'am Seema Thakur to step forward for honoring our guest with a token of floral appreciation. We should not stop applauding. It's a matter of great pride that we have such intellectual people amongst us today. And as is customary, as a part of the third national conference, we would now request all our dignitaries to please stand on the dais and release the conference proceedings. As the proceedings are being released, it's the hard work of many research scholars. Can we please give a huge round of applause while they are releasing the proceedings? Thank you so much, everyone. And now, moving on and without taking much time, we invite our first keynote speaker, Dr. Ravikant Mishra, to enlighten our August gathering onto his views on the theme of today's conference. May we please welcome Sir with a huge round of applause on the dais. Morning, one and all. Hello. Good morning, one and all. Now, Honorable Vice Chancellor of IKG, Punjab Technical University, which is one of the pride of the state of Punjab. Your visionary leadership here, Dr. Khan, ki jiske wajah se we all are here. A big clap for your visionary leadership. And because of that, we all are here right now, and we are already going to deliver this conference, and you all are the part of this gathering. Dr. R.C. Bhargava, who is a very senior, you can see the leader and Vice Chancellor among all the Vice Chancellors. His legacy and his all the experience is very much inspiring for all the younger professors like me. Dr. S.K. Misali is a dynamic leadership, as said by your team here. And right now he is already leading the Punjab Technical University as the registrar. He had already did the work in NIT Jalandhar also. Dr. Tripathi, we already knowing him, already a lot of his contribution has been made here. Dr. Naresh Sachdev, I think he is not here. Sorry. I met many times, and I am very sorry. So Dr. Naresh Sachdev, he is already under his dynamic leadership. I think you all are already being nurtured here in this campus. My colleague, I think many people I am seeing here from different parts of the Punjab, they are already reached here. My dear students, really this is a beautiful topic where we all are going to talk. आप थोड़े समय के लिए जैसे हमें I am a teacher and very close to your destination from here, from Louisiana itself. So I want your 20, 30, 40 minutes just to concentrate. 10 minutes I would, other participants will take.
your concentration is very much required because this is a very nice topic which has been chosen by your organizer and already we are going to deliver some talk on this topic. Indian knowledge system. हमें अपने देशा को कितना हम जानते हैं? हम just as an Indian, we should acknowledge our forefathers. What contribution they made for us. If you go anywhere in the world and people acknowledge the mathematics and they acknowledge the contribution of ancient Indian mathematicians about the mathematics. Everyone is drawing natural number. Can you tell why these numbers are called natural? Anyone from you? आप में से कोई बताएगा अपनी जगह पर खड़े होके कि हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? This would be valid. कोई बताना चाहेगा? Just you think, I will deliver here. हम बताएंगे आपको और just you imagine कि how we are empowered. कि हमारे पूर्वज उस समय क्या-क्या किए हमें और हमें ये भी नहीं याद है. Just you imagine decimal नहीं रहता तो क्या होता? अभी हम चंद्रयान की बात करते हैं. यूएस ने बहुत ज्यादा सैटेलाइट को किया है. इसरो हमारा उसका एक कंप्यूटर है. बट जस्ट इमेजिन कि एक फ्रैक्शन नहीं होता, डेसिमल नहीं होता तो क्या होता? जीरो नहीं होता तो क्या होता? And what Vedic mathematics now, every one of you, if you go for seeking your employment, then there are only 36 seconds for just to crack any MNC, top MNC, or any bank, PO, IES, or any examination. Here I will learn, I will teach you. Within 2 minutes आप जान जाएंगे कि वैदिक मैथ का क्या पोटेंशियल है. अभी जान जाएंगे, सॉल्व भी जान जाएंगे. But only your concentration is required. So if you go through this, so very quickly I will concentrate myself only on Indian knowledge system, focus on Vedic math. But very quickly, please. So this would be my outline of the talk. As I say, Indian knowledge system, historical perspective for Indian knowledge system. But I will go and I will discuss more about the mathematics part. Next. If you go through Indian knowledge system, then at least 4 pillars are very essential to address. I will not read, you will read. Ask Shankaracharya ji, just you go through and look only the last line which I have taken for you only. But students, what he isn't that beautiful concept which was already taken around the world. In many universities, the people are working on his concept. Now next, if you go through the leader, the next you can find this. Gautam Buddha. Just to look the last line and try to capture it. How positive thinking and the law of attraction can manifest one's desire into reality. आप सबने सीक्रेट पढ़ा होगा. कितने लोगों ने पढ़ा सीक्रेट? Just to look. और आप ये देखो बहुत हमारे बुद्ध का कि उन्होंने क्या कहा था, जिसका निचोड़ क्या था और कब कहा था? क्या कहा था लास्ट टाइम देखो? What is there? How positive thinking and the law of attraction can manifest one's desire into reality. आप हिंदी में हमने लिखा है जान के, आप थोड़ा कोशिश करो. मन ही सब कुछ है. जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो. हमारे रामायण में क्या लिखा? जय के जय पर सत्य सदैव सोते ही मिलई में कछ संदेह. लेकिन हमारा हिंदी है, हमारी अपनी भाषा है, हमारे अपने ग्रंथ हैं. हमने उसको कभी नहीं समझा कि सीक्रेट हम जानते हैं. सीक्रेट का जो लोगो है वो क्या है? यही तो है. Just to go through the research, the beautiful topic has been taken by Chancellor of marketing. Really, I congratulate you. कि this is the need of the hour. हम बड़े-बड़े रिसर्च की बात करते हैं, लेकिन हमने क्या अपनी खजाने को देखा? हमने उसके ऊपर कभी सोचा कौन करेगा? So this is really the third. I have taken the third personality, that is justice.
चाणक्य, just you look the beautiful. अगर ये नहीं रहती तो कहाँ से आता अर्थशास्त्र, कहाँ से फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आती? Just you go through and read. The last line I have taken just for you. If before you start some work, always ask yourself 3 questions. Why am I doing it? What might the results be? And will I be successful only when you think deeply? This was the philosophy of Cordelia. Now we are talking about Bloom's taxonomy. What, why, when, how, where and who. Now in these days. Whenever I was a student in primary school in somewhere in Uttar Pradesh, my teacher of mathematics, he taught me the first day, I keep 6 on something when their name are what, why, when, how, where and who. But now in 2025, I'm circling about 30 years in the higher education, we are the part of to discuss the OBE, outcome-based education. The concept was taken from Washington DC. So this is the need of आप भी कल के भारत को, आप कल को कहीं जाओगे, a lot of research are required in these areas. Next please. Now Patanjali. Just to look, and you might be known. He was our rishi. इनका कितना बड़ा योगदान है नहीं बताने की जरूरत है, just to get read one. So these are the figures which was very essential to develop our wisdom. और इसलिए हम सब लोग पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में इंडियंस कहीं भी हैं. You don't restrict, ये लोग जब थे उस समय हमारा साउथ एशिया पूरा इंडिया था. तो जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री हैं वो उनके अंदर भी जो बेधा है, जो चीजें हैं वो सब विरासत है. नेक्स्ट. नाउ सेज आर्यभट्ट एंड यू ऑल आर डूइंग. इसके पहले बहुत सारे और भी लोग हैं एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन में. आप टाइम ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई वुड नॉट लाइक टू टेल डिटेल, बट ओनली आई एम थ्रोइंग to my young students just to capture and to try to do your best whatever you can in these areas. Please. Now these are the figures, but you can go through and look their contributions. Hemchandra, Brahmagupta, Sakuntala Devi, Bhaskara, Aryabhatta, Satyendra Bose, PC, and Srinivas Ramanujan. You are already knowing. C.R. Rao. आप मुझे कोई बताएगा C.R. Rao के नाम से क्या है हमारा? C.R. Rao कितने लोग जानते हैं? तो पढ़ना है, इसको जानना है. ओके? नेक्स्ट. Now, this is how many from computer science? Computer science, BCA, MCA से कोई है यहाँ? BSc mathematics? नहीं. You know, now in these days, just to imagine Charles Babbage. Now we are talking about Industry 4.0 era. Just to imagine कि अगर चार्ल्स बैबेज नहीं आए होते और उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया होता तो क्या हम आज इंडस्ट्री 4.0 या जो हमारा ऑटोमेशन है इन एवरी वॉक ऑफ एरिया इज फुली ऑटोमेशन कैसे हुआ. और आप सरप्राइज होगा कि ये एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम. इफ यू वांट टू राइट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज then you must develop the algorithm. And how the algorithm came in how? तो algorithm को कितना पहले हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में देखा गया, बनाया गया, and but we forget about that. If you want to do anything new in Industry 4.0 era, or now we are talking about 5.0 era, then we must go through the algorithm, flow chart, then program. Next. This Pascal training, just to imagine. और इसको आप बहुत अच्छे से आप जाओगे तो a lot of research, a lot of different branches they are now taking this and they are discussing about this knowledge. Next. Now, this is the magic and fun we will do right now. तो आप अपने अपने मोबाइल में नोटपैड पर करिए कि ट्रेडिशनल मेथड से इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते होंगे. Don't do the calculator. अभी 1 मिनट में आप सीख जाओगे कि वैदिक मैथ से कैसे करते हैं. 991 I have taken 991 multiplied by 998
आप पहले ट्रेडिशनल मेथड से जानते हैं आप। नेक्स्ट आई विल टीच यू वैदिक मैथ क्या होता है। चलिए करना क्या है, हियर we will look for place value. Place value means I will look the nearest place value. Place value is here 1000. 991 का place value क्या है 1000. अब 1000 से कितना लेस है, only 9. So it means here we will write 009. Agreed? Okay? Now here 998. 998 means how much less? 2. So we will write 002. तो ऊपर क्या लिखा हमने 009, नीचे क्या लिखा 002. नेक्स्ट नाउ यू देयर। अब क्या आ गया 9 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 18. अब आप डायगोनल देखो, या तो 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो 998 से, तो क्या आएगा 989, या तो 991 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा 989. This is a Vedic math. Just imagine, कुछ नहीं करना होगा. I want once again I'm going to read the permission to chair, okay? Because I want every one of you at least इसको तो सीख जाओ. और as a professor I believe कि हम लोग का रोल केवल आपको इंटरेस्ट लगा देना और कुछ नहीं. आप फिर से बोलें कितने लोग ऑनेस्टली आप खड़े करो, कितने को नहीं आया आगे. Be honest, please do. Again I am going to. आपको क्या करना था, अब दूसरा लेते हैं 960 थोड़ा बड़ा 960 मल्टीप्लाई बाई 990. प्लेस वैल्यू से देखिए कितना कम है 040. यहाँ पर कितना कम है 010. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 400. अब केवल सब्ट्रैक्ट करना है जो लेस है. लेस क्या है 010. आसान है. 960 से 960 से 10 को माइनस करो, क्या आएगा 930. Just you look and imagine कि how genius were our ancestors. तो एक बार अपने सभी जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए तालियां बजाइए. ये लोग कितने genius. ये सब आपको काम करना है and we will be in touch. आपका वैदिक मैथमेटिक्स जो लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं पंजाब में, वो यहाँ कभी आपके लिए जो कंपटीशंस ओरिएंटेड रूप से होगा उनके टेस्ट रहेंगे एंड दे कैन डेवलप वर्क्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स. नेक्स्ट पेज. तो नाउ यू नो कि वैदिक मैथ के बारे में आप हिंदी में पढ़ना चाहेंगे कि वैदिक गणित की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसे एक भारतीय गणितज्ञ जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीरथ जी ने 1911 और 1918 ईस्वी के दौरान सर्च किया था. उन्होंने अपने जितने भी उनके ये सारे कंक्लूजन थे उनको एक अपने जी महाराज में छापा था. लेकिन अब जरूरत क्या है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं जो इसको इनोवेशन करें, इसको जनरलाइज कैसे करना है उस पर काम करें. देन द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you, sir. It is truly an honor listening to you, realizing the essence of what zero, Vedic maths and algorithm has contributed to us and how Industry 4.0 is based on the evolution of Indian knowledge system. Please give a big round of applause for these people. Now please join me in welcoming Dr. Professor Yogesh Tripathi, who has been at the forefront of educational reform. Sir will shed light on the integrating the rich heritage of Indian knowledge system into modern education. Please welcome, sir. सभी को सादर नमस्ते. मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सबने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का मौका दिया. मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से आभारी हूँ. और मुझे ये लगता है कि ये सौभाग्य मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं सचखंड साहब कई बार वहाँ पे मैंने विजिट किया है नांदेड़ में, और उनका हमेशा आशीर्वाद उस पवित्र स्थल का मुझे मिला है. और इसीलिए मुझे लगता है आज लुधियाना में
पीसीटी ग्रुप इंस्टीट्यूशन ने मुझे इनवाइट किया, और इनवाइट भी इस विषय पे कि जो पूरा विश्व इस समय देखना चाहता है भारत की ओर कि कैसे भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। मैं मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर मित्तल सर, प्रोफेसर भारद्वाज सर, प्रोफेसर मिश्रा जी, दो मिश्रा जी हैं, तो मैं एक प्रोफेसर मिश्रा जी है, प्रोफेसर रजिस्ट्रार मिश्रा जी को और सर देवा जी को, और प्रोफेसर गुजराती मैडम ने आईक्यूएससी के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया, कितने बड़े सम्मानित मंच के बीच में मुझे अपना स्थान, अपना विषय, अपना अनुभव साझा करने का आप सबने मुझे मौका दिया। मेरा मानना यह है कि आप सबको अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ को आश्चर्य भी हो रहा होगा कि मैंने सब लोग ने अंग्रेजी में बात करी, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है उसको अंग्रेजी में किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आईपीएस की हम बात करें तो मातृभाषा में बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आईपीएस की बात करते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो पूरा विश्व जिसकी ओर देखता है वह अपनी भाषा के साथ साथ, संस्कृति के साथ साथ बहुत वर्षों का, सैकड़ों हजारों साल के जिन महापुरुषों ने इसमें योगदान दिया है, देवतुल्य विद्वानों ने जिन्होंने योगदान दिया है, निश्चित रूप से हमें उसका संस्मरण और स्मरण करना चाहिए। हमसे पूर्व के वक्ता प्रोफेसर मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही आकर्षक चित्रों के माध्यम से आप सभी को बहुत गणित सबसे कठिन नहीं मानी जाती है, बहुत आसान नहीं माना जाता। गणित आसान इसलिए है कि नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं यदि आपको आता हो, और नहीं आता हो तो उसमें जीरो आने की पूरी संभावना रहती है। मैं गणित में थोड़ा कमजोर था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई किया, इंग्लिश और टेक्नोलॉजी का मैं एलुमनाई था, लेकिन बाद में मैं ग्रेजुएशन किया ऑनर्स सोशियोलॉजी में, फिर मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में आ गया। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आईपीएस की हम बात करें, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, तो मातृभाषा इसलिए भी आपको आनी चाहिए क्योंकि आई हैव विजिटेड मेनी कंट्रीज फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, and in the Punjab it's a rich tradition and the best practices if you are going to visit any of the place of the globe, especially Canada, USA, UK, Germany, France, Spain, Turkey, Austria, Czechoslovakia, Hungary, Geneva, or China, Australia, South Korea, Singapore, and I have visited many countries along with the list which has already been shared in front of you. And I have also presented my basic idea and understanding in front of the Augustus gathering in the House of Commons of the Parliament of Britain. On the topic is very relevant and contemporary with you all. As we know that if you are going to the class to discuss and to interact for any kind of a latest technology, latest idea, we have to focus on the generation. As we know that millennials, generation Z, Gen Z, or a generation Alpha is everywhere visible in our classroom, and they have already shown their interest related with the digital education and digital education towards the futuristic development of their own goal. If we talk about United Nations Sustainable Development Goal that you have mentioned, one of the previous speaker, Professor Dr. Naresh Sachdeva sir, told me about the Sustainable Development Goal, NSDG 4. As we know that United Nations Sustainable Development Goal number 4 is related with the quality education. As a teacher, as a student, as a scholar, we have to know
how can we be able to provide our potential of knowledge, our education towards every part of the society, every state of the society. After that, we can be able to say that we are providing the quality education to all. How? It's a big challenge. We know that our country has very distinct kind of geographical and geographic situation. No one can be able to compare with the education, infrastructure, resource person related with the northeastern part of our country or western part of our country like Bhuj or southern coastal part of our country in our country or J&K and Ladakh. But I can be able to assure you and ensure you that if we can be able to adopt the digital education in our education system, we can be able to fulfill and to meet out the UNSDG 4 related with the quality education. As UNSDG 4 says that if we are providing quality education to everyone, quality education to all, after that we can say that we are imparting the quality education to all, to quality education to every state of our society. As we know that there may be some UNSDG 4, besides UNSDG 4 quality of education, UNSDG 5 is related to the gender equality. How can we be able to impart our education towards the generation, towards the society, that we can say that we are providing the quality education? There cannot be any restriction related with the gender equality. How can we say that we are providing equitable, accessible education to all? To every state of our society, to every generation, especially millennials, Gen Z, and Generation Alpha. Again, UNSDG 9 has already been mentioned that the enhancing of scientific research and collaboration. Professor Sachdeva already mentioned about this, same about the collaboration, international collaboration and national collaboration of this same. Towards the digital education, if we are going to adopt the digital education to all, we can be able to collaborate the every part of our globe. It's very easy. I have been recognized by European Commission, United States of America, and we have already contributed my best efforts toward the projects of European Commission, Erasmus Plus projects, and USA for media literacy. Room where it happens, it's a project of US Embassy. And I'm one among the three of the professors from our country. And if we look upon the UNSDG 10, it's related with the reducing inequalities from the society. How can a teacher or a scholar, as a student, if you are going to opt to join as an entrepreneur or to be serviceman of any organization, how can you be able to reduce inequalities in your organization, in your society, in your university, in your education system? If we provide the digital education to all, it's very easy to reduce inequalities from the society. As I already mentioned that, if you are providing the digital education to all, quality education to everyone, it's very easy to reduce the inequalities from the society. बड़े बिजनेसमैन टाटा और बिरला का बच्चा भी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकता है और गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है क्योंकि बहुत मिनिमम फीस होगी. As from the MOOCs courses, from the SWAYAM courses, we can be able to provide you the quality education to all. It's free, it's easy, accessible to all. That's why UGC has already been acknowledged up to 20%, then up to 40% of the credit can be transferred from the MOOCs courses, massive open online courses. And I feel privileged to say that I'm the National Coordinator for Society and Media of SWAYAM MOOCs course,
and I am the co-principal investigator of EPG Pathshala. It's a part of national mission on education through ICT of Government of India. Then we can be able to reduce inequalities from our society. Again, UNSDG 16.10 is related with the access of information, protection of fundamental freedom. सब लोग कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी ले आनी है तो डिजिटल एक्सेस को, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ानी है। आपकी भी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज की वेबसाइट होगी, हर नोटिस, हर सूचना देनी है। नैक का विजिट होगा, एनआरएफ की आप विजिट कराते हैं या एनआरएफ के जो डेटा सबमिट करते हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो डेटा आप सबमिट करते हैं वो डेटा आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। Am I right or wrong? So it's a part of 16.10 UNSDG related with the accessible information. Again, UNSDG 17, partnerships for the goals. As an academic institution, we can be able to collaborate, we can be able to invite the people from all over globe or from the globe. There is no restriction. It's a part of the UNSDG 17 or UNSDG goal of the 17. And if we look forward to discuss and to reach out every part of our society, the digital education, inclusion in higher education institutions can be the way forward. सर ने भी, प्रोफेसर मिश्रा सर ने कहा कि मैथ्स के बारे में, वैदिक मैथ्स के बारे में बताया। मुझे विश्वास है प्रोफेसर भारद्वाज सर बहुत अच्छा बोलेंगे क्योंकि उनका बहुत विशद ज्ञान है। प्रोफेसर मित्तल सर टेक्निकल एजुकेशन के वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, साथ के साथ उनका एक पास्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। मुझे ये लगता है, आई फील कि यदि आप डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, मॉड्यूल के माध्यम से अपने ज्ञान का परिमार्जन करके जो उत्कृष्ट ज्ञान है समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि MOOCs और डिजिटल एजुकेशन can be the only and the way forward. So there are so many things we can be able to discuss here, but I do believe that if you look forward to fulfill our country, Bharat, as a capital of the knowledge economy, we have to focus on digital education, inclusion in higher education institutions, so that we can be able to reach every UNSDG, as well as to reach every state of our society, to provide quality, equitable, accessible education to all. मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में, इनॉग्रल में इतना बहुत होता है, 10 मिनट मुझे लगता है कि मैंने लिया होगा आप सबका। आप सबने मुझे मौका दिया, सम्मान दिया और बहुत शांति से सुना। मुझे लगता है कि आपके टीचर्स ने बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन रखा है, जिससे सभी छात्र बहुत सुधी मन से, बहुत ही शांत मन से विचारों को सुन रहे हैं, जो लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, मिलते रहेंगे। और आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक ही बात कहूँगा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। Thank you so much for the sir. You know, as a person who has relied on the sources of EPG Pathshala and follows Swayam to learn, it's truly an honor to see a resource person like Dr. Lokesh sir standing over here and acquainting us with all the knowledge of what importance it keeps for us. Once again, a huge round of applause for Dr. Lokesh. Moving on forward, it is now my privilege to introduce Dr. Ramesh Chandran, whose work in the education sector continues to inspire us all. They will now share the perspectives of innovation and the fusion of traditional and contemporary practices in education. May I please request Ramesh sir to come here and address the audience, and will you please welcome him with a huge round of applause.
सम्मानित मंच और सुधी जी तो सामने बैठे हैं। समय बहुत कम है और विषय बहुत ज़्यादा है। जो विषय मैं देना चाहता हूँ कम से कम एक पीरियड का है और उसको 10 मिनट में देना है। और साथ में मेरी जो रिसर्च पार्टनर है वो आनी पाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उनका आर्टिकल भी मुझे पेश करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो IKS नाम की चिड़िया है क्या, पूरे देश में हल्ला मचाया हुआ है लोगों ने, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। और हमारा जो स्टूडेंट है वो पागल हुआ है कि IKS नाम की चीज लेकर कहां से आ गई है। इशू ये है बच्चों कि ये हिंदुस्तान पिछले हजारों लाखों सालों से एक रिच कल्चरल ट्रेडिशंस को लेकर जिंदा समाज, इस समाज ने पिछले हजारों लाखों सालों में दुनिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मुझे याद है कि जब मैं जापान से अमेरिका गया PhD करने फिलाडेल्फिया में, तो उस समय वहाँ एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ BA/MA में, ग्लोबल हिस्ट्री। और उन्होंने ये क्लेम किया अमेरिकन्स ने कि आज तक दुनिया में जो नॉलेज दी जा रही है वो यूरोसेंट्रिक है, इसको हम ग्लोबल सेंट्रिक बनाएंगे, ग्लोब सेंट्रिक बनाएंगे। मुझे भी इंडिया वाला एक क्वेश्चन बनाने को दिया गया। स्टूडेंट था तो इनकम कर दी थी, हमें क्लास में गई वहाँ, देखा कि वो जो टेक्स्ट बुक तैयार की थी ग्लोबल हिस्ट्री की, उसमें हिंदुस्तान को 4 पेज, चाइना को 16 पेज, वेस्ट एशिया को 80 पेज और यूरोप को, अमेरिका को 650 पेज, 800 पेज, 700 पेज की टेक्स्ट बुक। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल संस्कृत स्कॉलर हूँ, बचपन से गुरुकुल पाठशाला में पढ़ा हूँ, छात्रों को पढ़ा था, ये समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैंने तो ये पढ़ा था बचपन से, 2 साल 10 साल की उम्र से, कि पूरी दुनिया को जो मैथमेटिक्स है वो इंडिया ने दिया है। और मैथमेटिक्स जो है वो नॉलेज का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का बेस होता है। मैंने ये भी पढ़ा था कि अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, एस्ट्रोनॉमी है। इन चारों मैथमेटिक्स की ब्रांचेस में इंडिया ने 6000, 7000, 8000 BC में दुनिया को, एशिया को नहीं पूरी दुनिया को ये नॉलेज दी। तो इतिहास मेरे ध्यान में था। हम 4 चाइनीज दोस्त थे, एक मैं इंडियन था, हम लोग भारत वापस आ गए और हमने कहा कि हम ग्लोबल हिस्ट्री में भारत ने क्या कंट्रीब्यूट किया है वो हम प्रमाणित करके समाज को देंगे, दुनिया को दिखाएंगे। भारत आ गए, पैसा DU में नौकरी भी लग गई और मैंने इसे काम शुरू किया। यहाँ मैं क्यों हूँ? क्योंकि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा का इसे मिश्रा जी का आपको आना पड़ेगा, जबकि हमारी आज सोमनाथ गुजरात में न्यास की बैठक चल रही है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, जिससे मुझे होना चाहिए, पर मुझे लगा यहाँ आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? IKS के नाम से मैं अभी 10 दिन पहले IIT गुवाहाटी में था, IKS पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैंने देखा 90% लोग जो हैं वही आयुर्वेद, योग, रामायण, महाभारत, वेद, इनके टॉपिक्स को लेके बकवास कर रहे हैं। कोई भी इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी अगर सोने की चिड़िया बनती है तब बनती है जब उसकी सोसाइटी में साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप हो। भारत में पिछले हजारों सालों में जो आज UGC के 82 सब्जेक्ट्स हैं हायर एजुकेशन में, मैंने रिसर्च की 2 को छोड़ के 80 सब्जेक्ट्स में जो हम लोग हायर एजुकेशन में ले रहे हैं, चाहे वो साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, ह्यूमैनिटीज के हों, सबके, उन सबके अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय मिलता है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने पिछले 70 सालों में मैंने करीब 1600 आर्टिकल्स और बुक्स इकट्ठी की हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, ह्यूमैनिटीज के ऊपर भारतीय समाज ने क्या चिंतन किया है उसके ऊपर उन लोगों ने रिसर्च की है। बाई चांस रिसर्च अंग्रेजी में है, इसलिए वो
क्योंकि हिंदुस्तान आज आजादी के 70-75 साल के बाद भी 6% लोग अंग्रेजी समझते हैं और 94-95% जो पॉपुलेशन है वो गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी इन भाषाओं में हिंदी है, इसलिए उसका प्रचार नहीं हो पाता। पर हम लोग जो प्रोफेसर्स हैं DU के, JNU के, जादवपुर के, हम लोगों ने एक ही काम किया है, अपने विदेशी प्रोफेसरों की जो यूरोसेंट्रिक थॉट है उसको लेकर हम आते हैं और इंडिया के बच्चों को उसके अंदर ढाल देते हैं। अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि भारतीय ज्ञान की परंपरा है, हर नॉलेज में, हर डिसिप्लिन में, हर सब्जेक्ट में भारतीय समाज का योगदान दिखाई देता है, मगर है काम। मैंने पिछले 2 साल में जो काम किया है, देखिए जब साइंस कांग्रेस हुई तो वहां पर लोगों ने पुष्पक विमान ये वो सब की बात करी, लोगों ने मजाक बनाया मीडिया ने, क्योंकि उसमें प्रामाणिकता नहीं। IKS हिस्ट्री का सब्जेक्ट, हिस्ट्री वो होती है जो 2 एविडेंसेस को लेके चलती है, एक टेक्सचुअल लिटरेरी एविडेंस सबको चाहिए और दूसरा हिस्ट्री वो पक्की मानी जाती है जहां आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। पिछले 100 सालों में 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, खुदाई 32 में रिपोर्ट आई थी, तब से लेके और आज तक कम से कम 400 जगह हिंदुस्तान में, जिसे आप पाकिस्तान कह रहे हैं, जिसे आप अफगानिस्तान कह रहे हैं, जिसे आप वेस्ट एशिया कह रहे हैं, ये पूरा विभिन्न भारत एक था, वैदिक समाज था, एक समाज था। अब हम जियोलॉजिकली या पॉलिटिकली अलग अलग कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, मगर इन पूरे ईरान से लेके और पंजाब के, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में जितनी खुदाइयां हुई हैं उसमें कंटिन्यूटी में हमको 3-4 एजेस मिलती हैं, प्री हड़प्पन, हड़प्पन, मैक्योर हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। सरस्वती नदी के किनारे आपको और खास करके पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट मुगल ने जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में खुदाइयां करके प्री हड़प्पन वैदिक सोसाइटी को निकाल के दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी IKS के मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर राखी नदी में जो हमें आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स जो चीजें मिल रही हैं, उनमें किस तरह से केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, एस्ट्रोनॉमी को, उसमें कैसे मेटलर्जी को कैसे यूज किया हुआ है, इसके ऊपर हिंदुस्तान के, दुनिया के सब आर्कियोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स पब्लिश करके रखी हुई। मैं आपको एक एग्जांपल जो है, जो हमारी टीम हम लोग काम कर रहे हैं और आजकल हम खास काम कर रहे हैं, साइंसिस करने कर चुके हैं, अब हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये हिंदी में नहीं आएगा इसमें। जैसे डॉक्टर मीनाक्षी राठी को आना था पेपर प्रेजेंट करने के लिए, शायद फोन की वजह से ये आ नहीं रहा है इसके अंदर। अब हमने इसमें क्या किया था कि प्राचीन भारत में तांबा जो मेटलर्जी का एक आइटम है, आयरन की तरह, गोल्ड की तरह। अब ये जो तांबा है ये आपको 7000-8000 BC प्री हड़प्पन एज का आपको मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में मिल जाता है, आपको इराक के बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया में मिल जाता है और वही कर रही है। तो ये टॉपिक जल्दी से आगे बढ़ा दीजिएगा। तो ये जो है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हम इसी की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इराक के एरिया के अंदर। तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें आपको जितने भी मेटलर्जी के मेटल्स हैं, उन सबकी टेक्नोलॉजी, उनके आयस, उनकी खदानें, उनकी भट्टियां किस तरह से पूरे खुदाइयों में हमको प्राप्त होती हैं। ये वीडियो आप जल्दी बस पूरा दिखा दीजिए, जो आगे चल दीजिए थोड़ा। देखिए मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ये प्री हड़प्पन साइट है आर्कियोलॉजी की। अब इसमें 7000-6000 ईसा पूर्व का जो है तांबे का मनका, और उसके अंदर कपास, यानी 7000 BC में इंडियन सोसाइटी ने कॉटन को पैदा कर लिया था। ये सब इसमें प्रमाण मिलते हैं। और आगे जल्दी चलिए, ये 2 चीजें हैं जो तांबे की मिलती हैं हमें मेहरगढ़ में 7000-6000 BC के अंदर। आज से 9000 साल पहले की बात है। इसमें आपको ये एक चक्र मिल रहा है और एक ये मनका आपको दिखाई दे रहा है। फिर पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, राजस्थान की,
हरियाणा की जितनी साइट्स हैं ये, जहाँ जहाँ आपको तांबे की पट्टियाँ मिल रही हैं, तांबे की अरावली की खानें मिल रही हैं, खदानों से निकाला हुआ कच्चा माल मिल रहा है, उसको भट्टियों में कैसे पकाया जा रहा है, उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। और आगे चलिए, इसके बाद ये जगह है मुंडी का, और ये सैदकाला टेपे, पाकिस्तान के साइट्स हैं, गंगा है, सराय खोला है, ये सब 3000 BC यानी हड़प्पा काल की आपको चीजें बताती हैं। अमरी में आपको मिलेगा, राजस्थान में भी। देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम की सबसे बड़ी बात है कि इंडियन नॉलेज चाहे वो आर्टिजन्स कारीगरों के पास है, चाहे या वो लिटरेरी एविडेंस के अंदर है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर है, ये सारी कंटिन्यूटी में है। यानी एक चीज अगर आपको बलूचिस्तान में मिल रही है, वो चीज आपको राजस्थान में भी मिल रही है, वो चीज आपको हरियाणा या पंजाब में भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये कि इंडियन सोसाइटी ने अपनी जो नॉलेज उन्होंने, अब उसका इशू क्या है जिसके लिए हमको जरूरत है आज यंग जनरेशन को, कि वो जो यूरोसेंट्रिक विदेशी इतिहासकारों ने इन सब को ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर पश्चिम एशिया में या ईरान में, अब जैसे बलूचिस्तान में वहाँ कहीं इंडिया का नहीं है, अरे आज इंडिया का नहीं है ना, मगर जब 3000 6000 BC के अंदर था, तब ये पूरा एक हिंदुस्तान एक वैदिक समाज के रूप में था। हमको उसकी लाइफ में अपनी सब चीजों की वही चीज जो बलूचिस्तान में, वही राजस्थान में मिल रही है, वही राखी गढ़ी हरियाणा में मिल रही है, वही आपको हिमाचल में मिल जाएगी, वही दिल्ली के अरावली की पहाड़ियों में आपको। और आगे चलिए, ये सब चीजें हैं हड़प्पा में जो तांबे की वस्तुएं मिलती हैं। आप नेक्स्ट चलिए, आगे चलिए, टाइम नहीं है। अभी देखिए, ये जो है ये भट्टियां नाशपति के साइज की हैं, जमीन के ऊपर हैं, ये सब भट्टियां जो है आपको आटो साइज से मिलती है। आगे चलिए, ये देखिए तांबे की कोहन दौरों में ये सब चीजें आपको मिलती हैं। यानी हम आपको 7000 BC से लेके चले हैं, अब आपको 3000 BC के अंदर ले आए हैं। ये सब जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट पे प्राप्त होती हैं। ये सारे बर्तन नेक्स्ट दिखा दीजिए, हथियार भी है, औजार भी है, बर्तन भी है, ये सब चीजें हमको यहाँ मिल जाती हैं। और धातु मेटलर्जी का जो पूरा ओरिजिन, डेवलपमेंट और आज भी, और तीसरा जो इसमें एक दूसरा प्रमाण है, इसमें वैदिक साहित्य में, यानी ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, महाभारत में, रामायण में, वही चीजें बाद में आपको कंटिन्यूटी में मिलती है। खाली दिक्कत क्या है कि हिस्टोरियंस ने इंडियन क्रोनोलॉजी को भारतीय काल के निर्धारण करते हुए उल्टा सीधा साधा किया हुआ। हमारी जरूरत यह है कि हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन क्रोनोलॉजी को रखते हुए इन सारे लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को लेकर अपने स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल मेटलर्जी या साइंस या टेक्नोलॉजी है उसकी दो विशेषताएं आप आगे चलिएगा। पहला होता है कंटिन्यूटी में, दूसरा क्या है कि वो नेचर के खिलाफ नहीं है। आज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, वहां आप पर्यावरण का नाश करके कर रहे हैं। और थर्ड आइटम उसका क्या है कि ये सब छोटी छोटी यूनिट्स हैं, कुटीर उद्योग के रूप में है, ये बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में नहीं है। इसलिए जो इंडियन ट्रेडिशन ऑफ आर्टिजनशिप है उसको ये मजबूत करती है। और अंतिम जो इसका प्रमाण है मेटलर्जी का या साइंस का या टेक्नोलॉजी का, वो है हमारी फोक ट्रेडिशन। यानी आज भी आपको दिल्ली में या पंजाब में एक किनारे में जो लोहार गाड़ी में चलते हैं, जो लोहे का सामान बेचते हैं, आपको मालूम है कि उसकी जो भट्टी छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, वो लोहे को गलाने के लिए आवश्यक 1250 डिग्री की हीट पैदा करती है, छोटी सी हो। उसके पास आज है, आज भी तांबे का, कांसे का, लोहे का हमारे पूरे देश के कारीगरों के यहाँ रखा हुआ वो ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। पर वो छोटे रूप में है, डेवलप इसलिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा सस्ती माल सप्लाई करती हैं। जरूरत ये है और इसकी आवश्यकता आप लोगों को इसलिए है कि जब तक भारतीय समाज ये मान के चलेगा यूरोसेंट्रिक थॉट के अनुसार कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स
जो आप आज यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में पढ़ रहे हैं ये सारी वेस्टर्न थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं, जबकि भारतीय समाज ने पिछले हजारों लाखों सालों में अपने समाज को संचालित करने के लिए, अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए, अपने समाज को साइंटिफिक डेवलपमेंट देते हुए, डेवलप करते हुए अपने युग के समय के अनुकूल उन्होंने जो चीज पैदा की है, जब तक आपको ये आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के भारत के हम लोग जन्मदाता हैं। हाँ, पिछले 1012 साल की गुलामी में हम अपने सोने की चिड़िया का रूप भूल गए हैं। और अगर भारत को दोबारा सोने की चिड़िया, विश्वगुरु कह रहे थे, विश्वगुरु बनना है तो तभी बनना पड़ेगा जब इस देश की गरीब जनता जो आज आर्टिजन हमारे हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, उनकी ट्रेडिशनल इंडिजिनियस नॉलेज को ऑनर करते हुए उनको आज की साइंस और टेक्नोलॉजी से हेल्प करके उनको ज्यादा समर्थ बना सके। थैंक यू। I am truly mesmerized by the impeccable knowledge by which you have related the study of archaeology and metallurgy in highlighting the Indian knowledge system and making of India in the present. Thank you so much, sir, for imparting the educational insight with us all. Thank you so much, sir. Please give a huge round of applause. Now it's my pleasure to invite our Honorable Vice Chancellor of IKG Punjab Technical University, Jalandhar, Dr. Sushil Mittal, to address the gathering. A distinguished educator and a visionary leader, Dr. Mittal has made remarkable contributions to the field of education, learning innovation with the profound wisdom of Indian knowledge system. Please welcome, I welcome you on the dais, sir. Thank you, ma'am. I am really honored and very happy to be here this morning. Respected Dr. Khan, Director General, Dr. Bhagwat, Dr. R.K. Mishra, Dr. Tripathi, Dr. Sachdev, ma'am, ladies and gentlemen, and many deans and heads of the departments, colleagues from PCT and other dignitaries sitting in the audience, ladies and gentlemen, and my dear students. To be a Vice Chancellor of a university is certainly a privilege of an individual and an honor. At the same time, it's a great responsibility also to come up to the expectations of the society. I believe any Vice Chancellor cannot dissociate itself from the society. It is not confined only to the university premises, university domains, but it has its impact, directly or indirectly, to many parts of the society. And I am very conscious of it, that what are my roles as a Vice Chancellor of a technical university, to oversee the growth of technical education in the university, in the state of Punjab, and in our society. With my experience of education, getting education and sharing education with students, colleagues at state level, national level, international level, got a lot of experience and information, and it was a very satisfying experience. First of all, I speak to the young generation, the students who are expecting guidance
from their teachers what is the way forward, what to do next. We are doing our duty, we are sincerely studying, learning, exams, grades, and even placed. Is that all? I believe it is a part of the journey. Rest, I would advise the students to take the challenge at the level you like. If you take the challenge at local level, you can rise only to the local level. If you take the challenge to the state level, that is your choice. But I believe you should take the challenge at the international level. Students who are being taught in our system, they are taught as per the international standards. Maybe a little less, maybe a little more, but it is not nevertheless sufficient. It is nevertheless deficient of anything from the global standards. Our history, our legacy shows that whenever our students have gone abroad and taken a challenge, they have succeeded and they have become partners in the growth of the world, not only in India, but they have always made their place at the global levels. So my advice, first of all, to the young students is that be confident and take the biggest, the highest level of challenge. And you can rise and you can achieve it. This is from my personal experience. I was also a student like you. Every student never knew whether I would complete my BSc and what next. Never knew. Then MSc and then PhD and then everything got my way. You can also do it. This is my first and foremost message and advice to the students. I also want to say that the difference between the different levels of institutions is only in the ambience. It is not in the building. It is not even the place, whether you are studying in Ludhiana or Delhi or Bangalore. But what is the ambience in which you are being taught? What is the environment? What is the motivation level in the corridors? So I have found, even my, say, only 100 feet I have walked in this university, in this college, and I am sure that the ambience here is excellent. Those who are studying here, they can be sure that their future is safe. But the only thing they have to learn is to take a bigger challenge. Next, we have listened to many learned speakers who have spoken on Indian knowledge system, who have talked about our rich heritage, rich culture, and so on and so forth. The idea of sharing this knowledge
was that you are to carry it forward. You have a big responsibility to first understand what is our legacy and how to carry it forward so that we can show to the world that we were number one in the knowledge system some point of time because of some reason, and we should once again become the leaders of Indian knowledge system or the knowledge system as such. Your time in this college life is very much limited. Number of days you are to stay on the college is limited, and you will realize later on that it will be the best period in your life as you grow and find wherever you go, you will find that those were the best days. Now we are telling you that these are the best days and take the maximum use of it. How can you take maximum use of it? You have to challenge your teachers. You have to challenge your management that what resources you need. Don't say, be afraid of it. Ask for it and try to participate. Try to build up a competitive environment amongst yourself so that you can prove yourself. People should come and see that where is that institute where the students are so much motivated. The faculty has a role to play, and I am sure from my experience I am telling you that it depends on the students that how much they can extract from the faculty. Our faculty in general is very much hardworking, knowledgeable, and they can provide you the knowledge, share with you the knowledge as per demand. If you ask for more, they will provide you more. Don't confine yourself to the boundaries of the curriculum. These are just structures to handle the system of education, that you have so much chapters to be studied, so much exams are to be conducted, but these are not the maximum knowledge you should gain. You should go beyond the syllabi. You should have the quest to know more and more about here and there, near the other parts of the syllabus. Maybe in some books you have more chapters than what is there covered in the syllabus. Syllabus is just an outline of a structured curriculum. It is not that other chapters which are not in syllabus are not relevant. So that is you should have the best to know what is to be studied. I will advise one or two things to the, once again, students, that first of all you should remain connected with your roots, means parents. You should be always in touch and obey them, and unfortunately they are not going to stay with you forever your life. Take the maximum guidance advantage from your parents and teachers. Second, take care of your good health, because the challenge is very big and you can meet the challenge only if you keep yourself in good health. Time is very much limited. Do time management so that you can plan your journey. And
another thing which generally people don't talk, but I will say that believe in the existence of God, trust in the presence of Almighty, that will help you to grow and rise further and further. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your enthralling words of encouragement. It's truly a blessed moment for us at PTC to have your august presence here. Your views about expanding our horizons, having that candid confidence and accepting learning as a measure of growth and accepting challenges which will help us improvise more is surely something that we all need to learn about. So can we please have once again a huge round of applause for our wonderful guys. Moving on further, let's formally welcome Dr. S.K. Mishra, a leader in redefining educational approaches who will offer valuable insights into how the Indian knowledge systems can be harmonized with cutting-edge innovation in India. Will you please welcome Sir with a huge round of applause. Thank you very much. Honorable Vice Chancellor Professor Sushil Ji, Professor Ramesh Bharadwaj ji, Dr. R.K. Mishra ji, Professor Tripathi, Naresh Sajdewa ji, and Harmeet ji. And special thanks to our Dr. Kang ji, who has even consented us to organize this conference over here in association with the AIFP and and thanks to Madam Gujarati, who was very much involved to organize this conference. Basically, all the dignitaries, as already mentioned about the IPS, how we can move about the IPS, how to implement, what is the IPS. Everywhere we are talking about the IPS, but what is the IPS? हम अपनी बात करें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 in year 2020 announced by the federal government, and that was required to be implemented in all the across India. Basic, that education policy reflects all kind of development, not infrastructure development, human development. They talk about the how we can develop the human who is going to contribute to the nation, and so that we become, as India, as a state, we become a kind of global knowledge hub. And I think we are doing. Today we are organizing this conference that is too much associated with that is one theme that given in that NEP 2020, this IPS. IPS को क्यों जोड़ा गया? Because of आज हम बैठे हुए हैं देश की आज़ादी के बाद इतने साल निकल गए और हम पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारी धरोहर को भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से भारत जी ने एक बात बताई कि किस तरह से अगर हम प्रूफ के साथ चलते हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज थी जो हम अपने पुस्तकों में इंक्लूड नहीं कर सके। हमारे जो विद्यार्थी हमारे शिक्षक उस चीज को नहीं बता सके क्योंकि हमने वो काम किए, लेकिन उसकी कोई रिटर्न हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हम तभी कर पाएंगे जो उसकी रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड हो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छी तरीके से बातें कैसे हड़ता के पुरानी उसमें जाएं और कुछ चीजें आपको मिलती है 7,000 साल पुरानी, वो भारत की परंपराएं थी जो उसमें सोचे कि मटके बनाने का उस समय कोई ऐसा औजार थोड़ी ना आज की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कोई मटका बना रहा है, कोई अलग तरह औजार बना रहा है, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी थी, उसको कहीं रिटर्न नहीं किए गए। ये रिटर्न थी तो बीच में हमारे पास मुगल आए, उससे पहले कई अंक्रांता आए जो हमारी कंट्री पे सारी जो नॉलेज थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप नालंदा की लाइब्रेरी में जो उस लाइब्रेरी में क्या नहीं था, हर एक चीजें अवेलेबल थी, लेकिन उसको जला दिया गया। कई साल उन्होंने जलती रही लाइब्रेरी, तो हमारे पास ग्रंथ थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब उन सब चीजों को दोबारा कैसे अपनी करिकुलम में लेके आना है उस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके जाना है, एक विकसित भारत 2047 में देखना है, तो
हमें वो सब चीजें करना है जो हमारे पूर्वज करते थे। उन धरोहर को लेकर के दोबारा अपने नॉलेज सिस्टम में, अपने करिकुलम में लेके आना है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हम एक इंडियन नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करें, एक इससे का एक इनिशिएटिव है कि उसको इंडियन नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को अवेयर होना चाहिए एटलीस्ट इंडियन नॉलेज है क्या, हमारी भारतीय परंपराएं हैं क्या, हमारे भारतीय ज्ञान जिससे मैथमेटिक्स की बात की गई, सेकेंडों में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आजकल हम उसको कैसे बताते हैं, अबेकस। हम देखिए सब लोग आजकल के बच्चे आते हैं ना, अबेकस की क्लास लेते हैं। वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज है, आज उसको मॉडर्न की तरह पेश किया जा रहा है। तो हमारे पास वो सारी सभ्यताएं थी तो हम कैलकुलेशन मिनटों में कर सकते हैं। आज जल्दी आज ही कल ही की बात है, इंदौर में, उज्जैन में एक बैटरी घड़ी का उद्घाटन हुआ है। एक बैटरी घड़ी लगी है जो हम 12 घंटे में डिवाइड करते हैं। उसमें इस तरह से नहीं है, वो सूर्योदय के अकॉर्डिंग चलती है। उसकी बेस है सूर्य। सूर्य के कब वो सुबह होगा, कब रात होगा, और थ्रू आउट वर्ल्ड उसकी कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं। वो घड़ी कल ही आप जाके इंस्टॉल हुई और यहाँ पे भारत में उज्जैन में, और पहली ऐसी बैटरी घड़ी है जो विज्ञान बेस्ड है, जो गणित के बेस पे वो घड़ी बनाई गई है। तो हमारे पास वो कैलकुलेशन है। आजकल लोग बात करते हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी पहले से भी हम भूल चुके, उसको कैसे अपने करिकुलम में इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। तो ये हमें पूरे काम को कैसे आगे बढ़ाना है। IKS की बात करें, जो हम NEP में सारी चीजें हैं, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगी, ये IKS का ही पार्ट एक है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगी। बच्चों को हमने एजुकेशन के साथ पुरानी बातें, कल्चर को बताना, स्पोर्ट्स को लेके आना, और वो चीजें उनको सिखाना कि कल को जाकर के मार्केट में केवल जॉब निकलना है, वो जॉब प्रोवाइडर बनते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाना है। 3 चीजों पे जो हमने बात की कि IKS को कैसे इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट वन इज अवेयर टू द कम्युनिटी, हम अपनी पुरानी नॉलेज को कैसे करना है। दूसरा स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट हमें अवेयर करना है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, चाहे प्रबंधन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सभी में कैसे कैसे हम उस चीज को, पुरानी चीज को स्टडी करते हैं, उसको लेके आना। तीसरा, उसको अपने करिकुलम में इन्वॉल्व करना, करिकुलम को अपग्रेड करना है, रिक्वायरमेंट आप आएगी। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो अपनी पुरानी परंपराओं को, उसको हम इस तरह से लेके आगे बढ़ सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक वर्ड होता है कि IKS में जो चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं ले, 1 बजने वाले हैं। हम बात करते हैं कि IKS में अपनी लैंग्वेज की यूज करना। चाइना, अमेरिका क्यों आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो अपनी जापानीज में बात करें, वो चाइनीज में बात करें, और उनके लिटरेचर, उनके डॉक्यूमेंट बुक इज अवेलेबल ऑन द सेम लैंग्वेज। हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड के हैं, कहीं और से स्टेट से आए हुए, उनकी किसी की लैंग्वेज पंजाबी है, किसी की हिंदी है, किसी की और भी कई भी लैंग्वेज होता है, लेकिन बुक्स अवेलेबल नहीं है, हमें पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में। इवन faculty is also not very much comfortable to deliver in English. So how to inculcate such kind of material in our syllabus? हमें उससे से कोड डेवलप करने पड़ेंगे, हिंदी में, पंजाबी में। PTU ने शुरू किए थे कि अपने जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, that is also need to be translated into पंजाबी, और कुछ सब्जेक्ट हमने स्टार्ट भी किए, क्योंकि जिससे कि बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो। सेकंड बात आती है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देना। पुरानी उस सभ्यता को जब हम डालेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और आगे इनोवेशन, माइंड आई एम टॉकिंग इन हिंदी समवेयर, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, पंजाबी, लेकिन क्या है आपकी सोच क्या है, किस लैंग्वेज में आप सोचते हैं, आपका बर्थ प्लेस, आप जहाँ पे बैठे हुए आप मदर टंग क्या है, आपकी जो सोच है डेवलप हो रही है उसी लैंग्वेज में डेवलप। तो आप अच्छी तरह तभी कर सकते हैं जब आप अपनी लैंग्वेज में ही काम करना शुरू करें। लेकिन बीइंग अ ग्लोबल हब ऑफ द सेंटर, हमें हर लैंग्वेज आनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज and thinking language. There are kind of different kind of language. It's always not that you are thinking in some English and you are talking Hindi. It's always not that. So कभी-कभी हमें thinking process अलग है और communication purpose अलग होता है. तो हमें language पे भी ध्यान देना पड़ेगा.
हम यूज करते हैं इंडिया बात करते हैं, हम भारत क्यों नहीं, हम भारत हैं, हम यूज करें भारत, हम उसको ट्रांसलेट करके इंडिया क्यों बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। हम योग बोलते हैं, हम उसको चेंज करके योगा करते हैं। ये चीजें जो लैंग्वेज जो वर्ड है ये बहुत सारी ऐसी है, तो हमें वो वर्ड अपने इंडियन कल्चर के वो वर्ड लेके आने पड़ेंगे जो ट्रिपली वही यूज करें इंटरनेशनल लेवल। देन आ जाता है 360 इवैल्यूएशन आफ्टर स्टूडेंट, दैट इज पार्ट ऑफ आईपीएस। हम स्टूडेंट की इवैल्यूएशन टर्म एंड एग्जामिनेशन पे करते हैं, नो, हमें स्टूडेंट को होलिस्टिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन सिस्टम लाना चाहिए कि वो स्टूडेंट अपना बिहेवियर कैसा है, उसका उसकी खुद की वैल्यूज क्या है, स्पोर्ट्स में क्या है, उसकी इनोवेशन क्या कर रहा है। इस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट, और वो कैसे हो, अपनी खुद की इंडियन कल्चर को उसमें इंटरप्रेट करके अपने सिलेबस में चेंज करके। अब हम बात करते हैं कि ठीक है हम ये करते हैं, और एक महत्वपूर्ण है कैरेक्टर बिल्डिंग। हम अपने किस तरह के कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं। रिसेंटली कल परसों में एक न्यूज था और थ्रू आउट कंट्री हम देख रहे हैं, प्लेस हो रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड उन्होंने दूसरी कम्युनिटी का फ्लैग बनाया और उसने फायर करके उसको मार दिया। वहां पर दंगे बढ़ गए। क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है, हम अपने एथिक्स, अपना व्यवहार, अपनी नॉलेज उस तरह से पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को। इमीडिएट उन्हें कोई ना कोई गुस्सा आ जाता है, इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। तो क्या हम दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को? उस वैल्यूज को कैसे सिखाना है, बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है, दैट हैज आल्सो टू बी पार्ट ऑफ द आईपीएस, जिससे कि हमारा कंट्री में इस तरह की, हमारे देश में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जरूर ये इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं लिटरेचर जिससे वीडियो में ऑलरेडी हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, लेकिन ये जो पढ़ाने से नहीं आता, अपने आप में इंप्लीमेंट करने से आता है। हम अपने आप एज ए फैकल्टी इंप्लीमेंट करें तो दूसरे स्टूडेंट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरा एज ए यहाँ पे आए हैं सभी लोग क्या मौजूद है, मैं यही उम्मीद करूँगा कहीं ना कहीं कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत फोकस करें। और क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये अवेलेबल भी नहीं। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। हमें प्रयास करना है कि रिसोर्सेज को भी अवेलेबल कराना, अपनी लाइब्रेरी डेवलप करना हर एक इंस्टीट्यूशन में, कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फैकल्टी पढ़ना चाहे, हम अपने ग्रंथ साहब से इतने जाने सीख ले सकते हैं, हम अपने पुराण से इतने सीख लेते हैं। हमारे पास इतने पुराने वाले ग्रंथ हैं, कुछ जितने भी तरह के वेद हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और उनकी बताई हुई चीजों को हम सिलेबस में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे और बच्चों को डिलीवर करेंगे। तो मुझे लगता है वही एक भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में प्रयास रहेगा और हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि कैसे आईपीएस को आगे बढ़ाना है और उसको बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाना है, जब हम 5 मिलियन की इकोनॉमी बन सके और 2047 में हम देश को एक विकसित भारत में ले जा सके। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर भारद्वाज जी का, उन्होंने बहुत ही कम समय में मेरी इस निवेदन को स्वीकार किया और एज न्यास की तरफ से वो यहाँ आकर के हमें एक किस तरह से मार्गदर्शन दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर विश्वास का भी, उनको मैंने कहीं आपको फोन किया और क्योंकि मैंने सोचा कि उनका बायोमेट्रिक में बहुत अच्छा काम है, तो उनको भी अपने बच्चों के बीच में टीचर दिल्ली में आना चाहिए, इस कार्यक्रम में होना चाहिए, तो उनसे अनुरोध किया, तो यहाँ पे आए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वाइस चांसलर साहब का तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। आज एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी मीटिंग थी जिसमें हम लोग सारे एंगेज थे, लेकिन उस मीटिंग को उन्होंने पोस्टपोन किया आफ्टरनून के लिए और वो यहाँ पर आए और हमें आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की मैनेजमेंट को प्रकाशित किया है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की मैनेजमेंट, हमारे न्यास की तरफ से जितने भी कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग यहाँ पे 2 घंटे से हम लोग को सुन रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजें कान में
दिमाग में आ रही अच्छी भी लगी हो, कुछ अच्छी ना भी लगी हो, लेकिन दिस इज एन इनिशिएटिव टू just implement in the curriculum as a IPS, Indian Bharati Gyan Parampara, so that we can achieve, we can reach somewhere where the world is looking towards India, towards the Bharat, not India. So thank you very much, all of you. Thanks to Mr. Khan. Thanks to Madam for our invitation and our invitation. Thank you very much. Thank you, sir, for emphasizing the importance of language, thinking, behavior, character, and knowledge for building the holistic development of the students in the Indian education system. Thank you so much, sir. So, being a temple of learning, this day would become more fruitful when we honor all our dignitaries today. Truly, we are really indebted for the presence of all the dignitaries here in the Crimson Hall. Thank you so much, sir, for coming here and imparting your insights and knowledge with our students, the young minds of the future of the India. Thank you so much, sir. Moving on with the honoring ceremony, may I request our Director General PCB Group of Colleges, Dr. K.N.S. to please come on the stage and present a token of gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Sir of Punjab Technical University, Dr. Sushil Mittal. May we please give them a huge round of applause. I guess we should continuously applaud as Sir has taken the valuable time to come here and share the views with all of us. Thank you so much, sir. Now I request Professor Sopan Chana, Dean Student Welfare, to present the token of gratitude to Dr. Ramesh Chandra, Vice Chancellor, University of Haryana. We should not stop applauding till the honoring ceremony is going on. It's a matter of great pride for all of us. Thank you so much, sir. And now, may I please request Dr. Rajshri Singh Sarwal, Registrar, PCB Group of Colleges, to present the token of gratitude to Dr. Krishnan. Now I request Dr. S. Gandhi, Director, Institute of Engineering and Technology, to present the token of gratitude to Dr. Vivek Kumar. May I, thank you so much, sir. May I request Dr. Puneet Akreja, Director, PCB Group of Institutes, to present the token of gratitude to Dr. R. K. Mishra. We are deeply grateful for the valuable insights you have shared today, and it's a privilege to express our appreciation and a token of gratitude. May I please request Dr. Kapil Prashad, Dean Engineering Department, to please come to the
Honorable Director General of PCB Group of College, Honorable Dr. Ramesh Chandra, Vice Chancellor of Hisar University, Dr. S.K. Mishra, Registrar of PTU, Dr. R.K. Mishra, Professor of Sant Longowal Institute, Dr. Yogesh Tripathi, Professor, National Coordinator of MOOC from IP University. And my dear dignitaries, colleagues and dear students, it's my great honor for us that our VC sir has accepted our invitation and they have given us a very precious time, and we are happy that they all are with us. My big thanks to Dr. all the honorable guests, those who are on the dais. I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you for your invaluable contributions to the National Conference on Innovation and Best Practices in Education, Integration with Indian Knowledge System. As UGC has introduced with Indian Knowledge System, to know us because our students has forgot that what is our Indian system. With that, I remember and I will give the thanks to Professor Chandra sir that he has given the reminder of the 8th class when we were studying the history of Mohenjo-daro and Harappa time. So thank you very much sir for reminding us the time of the 8th class. With that, I will thank Dr. R.K. Mishra sir. He has explained very well of the Vedas, that how the Vedas, 4 Vedas are there and how the mathematical Chanakya were there, which the best knowledge of the India. With that, my big thank to Dr. Yogesh Tripathi sir, who has given us the knowledge about the MOOCs and e-Pathshala, which has been introduced by the UGC, and our students can get the benefits through the online. My big thanks to Dr. S.K. Mishra sir. He has given very support for organizing this conference. My big thanks to Shiksha Sanskriti Utthan Nyas and Academic Institute of Innovation and Technology Management. Without their support, this conference would not be success by us. With that, my big thanks to my management, Dr. Chancellor, all the directors of this organization, all the team members, all the professors, those who have support to organize this conference and to be success this conference. At last, not least, my big thanks to all the NIAS members, academic members, all the students, those who have listened this conference very well. Thank you very much for giving us. And big thanks to our VC sir, because he has given a very good tips to us, not only to the students. It is the indication for the teachers also. Sir has given a very valuable tips that students, you are here to give the challenge to your teacher. So I think that this is the indication for us also that we should be very aware that now the students are going to give us a big challenge. So thank you very much sir for giving us this. Thank you, ma'am. Now I request everybody to stand up for our national anthem. Ganga
students to please proceed for the classes, and I request all the directors to please come up to speak for the group अरे सोनी है चल जल्दी करो And a big thank you to all the students for being so patient. Thank you so much. I request all the esteemed guests present and please be on the dais. ये तो जैसे है जाऊँ मैं फिर आता है